Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is the recording for skills at the rate 100 where for 100 days we are bringing for you 100 different speakers from all over the country. The speaker is CA Preety Kelwani and the topic is all about valuation. We have learned about valuation methods and also solved various doubts which arises during our course of work. All the links for the PPT and everything are in the description of this video. Also, this video is sponsored by Soulful Success Academy by Komal Botra, who is a passionate life and mindset coach. She has trained over 500 plus professionals and individuals who help achieve their full potential. More of them in the link in the description. So now, what are we waiting for? Let's go. Hello everyone, welcome to 41st session for skills at the rate 100 where we are trying to bring for you 100 different speakers from all over the country. We have already done 40 session and today is one special session on one topic which many of us want to learn but there is no perfect guidance. This is very, I would say till now not so like it has not grown so much but it is developing and it is a very good scope. So we have the topic valuation and today we have a very special speaker Preety Kelwani ji. She is a member of ICI with over 18 years of professional experience. So she has got a vast experience in valuation, taxation, internal audit, advisory, project finance, everything. She has done this BCom from Allahabad University and MCom from Annamalai University. Also, her tenure as a career includes PwC Gurugram. So she has a vast exposure. Thank you, Preeti ji, for accepting our invitation. And also thank you to Mayank ji for coordinating and everything. So over to you, Preeti ji. Thank you once again for accepting our invitation. Hello, everybody. Good morning. So how many of you have idea about what is valuation and why and where we need it? Any idea, anybody? कुछ भी आइडिया है कभी सुना है वैल्यूएशन Okay, let's have a interactive session. So I will start with this. So today we'll take equity shares valuation. So what we are doing, we are learning as per Companies Act, as per IVSC, Rule 11UA, 11UA of the Income Tax Act. And the scope is today, what is the purpose? What is the scope of the valuation? So applicable laws can be Companies Act, IVSC standards, Income Tax Act, FEMA Act, IBC Act. And legal framework is Section 247, which is a new section which talks about registered valuer appointment. And 11U and 11UA talks about income tax rules where there is share transfer. Then IVS is like standards of valuation standards. So there are many standards. Next is what are the types of share valuation. So I have taken only the shares part. There are many more things that can be valued by a registered valuer. So I am a registered valuer under SFA category, that is securities and financial assets. So that includes equity shares, preference shares, convertibles, non-convertibles, CCDs, convertible debentures, intangibles like goodwill, brand, software, plugins, and it can include patents, etc. So these are very unique things which are happening all around. Lot of patents work is going on in pharma sector majorly. Then ESOPs and then Ind AS valuations. So can anybody tell why valuation is needed? Okay, if anybody wants to tell, I will unmute them. Yeah, please. Because let's keep it interactive. Okay. The actually main problem is that there are some noises if we keep everyone open. So anybody who wants to, you can write in the chats. Also, I will unmute. I am there every time. So anybody who wants to answer,
You can raise hand, you can write in the chats. I will immediately unmute you. There are answers in the chats. So anything is there in chat? Okay, for fair value, yes. Yes, for infusion of money. Yes, Ind AS, correct. Merger amalgamation. Yes. या और इसके अलावा हो सकता है लिक्विडेशन, और या फिर कोई शेयर होल्डर एग्जिट कर रहा है, या फिर नॉन रेसिडेंट आ रहा है, या रेसिडेंट एग्जिट कर रहा है. Many cases can be there. So there are three types of approaches: income approach, market approach, and cost approach. So income approach is DCF method. What we do is we take approximately 5 years of projections, and then we do the discounting. So let us understand first the discounting. What is discounting? What is WACC? Let's go to that WACC sheet. So yes. So this all we have done in CA finals exam. I hope is everybody a CA here, or how is it? Anybody non-CA, non-commerce background? Yeah, there may be maximum are chartered accountants only. Okay. So we can take up this question. Please take this question, then we can discuss further. What is the WACC in this case? The equity is 300 crore and the cost of equity is 15%. And preference share is 50 crore and the cost is 12%. Debt is 150 crore and the cost of debt is 10%. So the cost and the corporate tax rate is 30%. Can somebody tell me what is the WACC? Anybody? Yeah, there is one answer: multiply and divide by weight. Okay. Yeah. Is it in the chat box? Yes, yes. Any? Yeah, who's yeah, multiply and okay, Shagufta, can you do it or should I show it? Ma'am, you should show it maybe. Yeah. I'll go there. So these are the steps. First, we will add the total capital 350 and 150, that is 500, and then we will take out the weights: equity, preference, and debt weight. And then for debt, we will adjust with the tax because we get the benefit of the taxation in case of debt. And we arrive at WACC of 12.3. Anybody got this? Okay. Next question I have taken equity and debt only mix. So if 200 is the equity and cost of equity is 16% and debt is 100 crore and cost of debt is 12%, taxation is 25%. WACC calculation. So this is the answer for this.
total capital is 300. The weight of the capital is 0.66 and 0.33. And similarly, we do cost of debt is 9% after taxation. And then the WACC is coming at 13.7%. What I'm trying to establish is that there are three scenarios. One is equity preference and debt. The other scenario is equity and debt. And the third is high debt. So what is the first impression that comes when we talk about debt? Is debt good or bad? I would really appreciate if you can speak up, somebody, Shagufta or somebody. I understand you all are also somewhat dealing in some businesses or CAs here. Yeah, I have unmuted everyone. So if anybody wants to say, they can say. I have unmuted everyone. Okay. Let's keep it interactive. Yes. Yeah. Yes, ma'am. Debt is having a leveraging effect. Huh. So that's what, once we have to rationalize, like we used to study capital rationing. So in the similar fashion, we have to rationalize at which point debt and equity can be maximized and the benefit can be maximized. That will be the best mix of the capital. So hence we cannot say that debt is always bad. That debt is also good because that gives us the leverage. Yes, Hariji, thank you. So we go back to DCF. What is DCF? Can anybody tell me what is DCF? Any idea? Discounted cash flow. Huh. What we do in that? We are discounting the cash flows. Very simple. Huh. Yeah. So how we arrive at the cash flows? So what happens in the, like I do valuations. So valuations is very much market oriented. First of all, very rare it is cost oriented, and in the listed entities, it is mostly market related. So in unlisted companies, it is most of the times or 100% we can say that it is majorly DCF method. Why? Because whenever somebody is entering or exiting, we decide the share value. Even in case of uh, like unlisted entities or even partnership firms also, we have to see how the business is going on. So like in unlisted entities, we do the projections, we take the realistic effects of the future cash flows, then we discount it with the WACC. And then we arrive at the present value of the period. So that period is around 5 years or 7 years maximum. 10 years also we take sometimes when the company is achieving or going on the growth or maturing. So majorly valuations are coming in startup sectors majorly, but valuations are anyway happening in big sectors also, in merger acquisitions and very big listed entities also. Everywhere valuations are required, but majorly I'm talking about if you are trying to become a valuer, you get the unlisted sector, there's a lot of valuation and DCF is majorly required. So for DCF, we take the cash flows, we discount it. So we assume that 5 years is enough time for unlisted entities, but there is a major portion of the value that comes from the terminal value. And what is terminal value? Any idea? At the end of the period, Ah, project value or the residual value at the end of uh, the estimated life of the asset. हाँ, but यहाँ asset नहीं आएगा, business बोलेंगे. Asset का तो भी Business, yes, yeah. Yes. It is a very important terminal value. Why? Because जो valuation का major component है, more than 50%, it comes from the terminal value. Even if a small decimal change in the WACC or the growth rate, it has a very good impact on the terminal value
and then the terminal value has a 100%, I mean 50-60% weightage is there of the terminal value on the actual valuation of the business. Am I making it clear? Is there any doubt? It's clear. Yeah. So what we do is we value first we do the projections, and then we take the adjustment of pre-debt cash flow, after debt cash flows. We do the adjustments of the capex, adjustment of the I'll show 1 minute. I'll open one of the files. I will show one of the valuations. Just a minute, I'm opening a file. Can you see my screen? PPT is there. Okay, I'll share my. Share all. You have to do share all. Yes, can you see now? Yes. So this is a company where we have taken only 3 years of profits. बरोबर बरोबर. तुम्हाला तर काय मामा विजयदशमीच्या 1 second. It's a 1 minute. Everyone got unmuted. 1 minute. Ma'am, now you can speak. yeah. Yeah. So this company is having a revenue from operations we have taken. March 76 lakhs, March 25 79 lakhs, 87 lakhs, and then there is no change in this one. So where we go in this case, net profit after tax. What we have done, we have taken 3 years of the period, and then we have adjusted with non-operating income, that is other income that we credit in the P&L account. Then we add back the deferred taxes, because of which my profit must have been decreased. Then add back depreciation and amortization. Where we are landing in the cash operating profits. Then there is adjustment of the non-cash working capital. What is this? This is difference between the current assets and current liabilities. We arrive at net working capital. And then every year there is a chain of working capital. So last year it was 18, this year it was 3.55. So this is the effect of increase and decrease of the working capital. Is it visible? Yes. So we adjust this difference here. Changes in the non-cash working capital. That means that this is 15 lakhs is invested more. Hence, this is the part of my cash flows. So I have added back. Then I have taken the discounting rate.
and I have discounted it with my factor. So where is the discounting factor? We will go here, WACC. This is the cost of equity. Risk-free rate of return, we take it 10-year India government bond, which is generally 6 to 7%, somewhere in between. Then there is market premium rate that we get from the database available on the internet, or we can even buy it very specifically to as per the sector, as per the country. Then there is beta from the database again. We take out cost of equity and adjust it to the risk. Then this becomes the WACC. This is the WACC. And then we use the discounting on this. And we assume growth rate for 5%, 8%. But generally, we keep the growth rate in sync with the GDP growth rate, except only where some cases where GDP is less, but the growth rate is high. Can you give some example? Which sectors are those? Growth rate is very high. Vishal, Shagufta. Real estate. रियल एस्टेट ठीक है, रियल एस्टेट तो फिर भी कम ही रहता है. इतने सेक्टर्स हैं जहां पे बहुत बड़ा मतलब ग्रोथ रेट है इंडिया में, तो अमेजिंग ग्रोथ रेट है. जीडीपी रेट हमारा बहुत फिर 6-7% पे ही रखते हैं, 5-6-7 पे. बट ग्रोथ रेट कौन से सेक्टर्स में है? गिव मोर एग्जांपल्स. In the chats. अच्छा, इट्स इन द चैट्स. इलेक्ट्रॉनिक, एफएमसीजी, कंजम्पशन, रियल एस्टेट. यस, एक आंसर का मैं स्पेसिफिकली वेट कर रही हूँ, वो आया नहीं आंसर. टेक्नोलॉजी. यस. सीमेंट. यस, क्योंकि बिकॉज हमारी कंट्री में इतना डेवलपिंग है तो कंस्ट्रक्शन इतना हाई है कि सीमेंट भी बहुत. यस, गुड एग्जांपल. टेक्नोलॉजी इज डेफिनेटली, वी कैन नॉट एक्चुअली कैलकुलेट कि टेक्नोलॉजी का क्या ग्रोथ रेट हो सकता है. सो दीज आर सम ऑफ द सेक्टर्स जहां पे हम ग्रोथ रेट हाई रख सकते हैं. जस्टिफिकेशन भी अवेलेबल है हमारे पास. एंड देन वी डिस्काउंट टू गेट द प्रेजेंट वैल्यू. After discounting, we take the terminal value and arrive at the valuation. Equity valuation we arrive at. So can anybody tell me what is the difference between equity valuation and the enterprise valuation? Anybody? I think equity Ma'am, only. just enterprise is for the entire company as a whole. Entire business we are taking a value. And equity is equity value, particular equity share value to or equity share what is coming the value. Yes. Please mute. We will see what is. So this is business or enterprise value, which comprises of equity and debt and overall. That is known as the firm value. That is the enterprise value. So enterprise value represents the total value of the company's operation. 1 minute. Yeah. So enterprise value represents the total value of the company's operations. And unlike market cap, which is only value of the equity, EV considers debt and cash, giving a holistic picture. That means the total picture for the takeover portion. If somebody wants to take over the company as a whole, तो फिर enterprise value होगा. So market capitalization is share price into number of outstanding shares.
and that is for both short term and long term. And cash and cash equivalent is subtracted by the debt if it is there. So in this case, let us do this question. Enterprise value is 1000 crores, debt is 300 crore, and cash is 100 crore. So equity value will come to 800 crores. But the enterprise value is total 1000 crores. And if the shares outstanding is 8 crore, the value per share comes to 100 rupees. So EV in short is what the entire business is worth, but equity is what the investors' stake is worth. So business valuation covers the entire business. Equity valuation covers only the equity shareholders' value. Business valuation is independent of debt and equity mix, but equity valuation includes after accounting of debt and obligations. So business valuation is used when we are acquiring and we are valuing, but equity valuation is used by shareholders and stock market investors. Business valuation includes multiples of EV, EBITDA, EV sales, but equity includes PE ratios and PB ratio. So what is the importance of equity valuation? Can anybody say, unmute and say? This is the value where new investor come in, all existing investor can exit the business. So at that time that there should be a fair value where the right price they should be enter in the business or exit the business. So equity valuation helps in that. Valuation help at that particular time. Yes. So it helps us to know what is the value if somebody is entering in the business, how much should we take to justify the exiting shareholder or the partner. For regulators, Companies Act, FEMA regulations, and for fundraising, for M&A transactions, ESOP pricing, strategic planning, and like that. For investors who are coming and pumping in money in the initial businesses, this defines what will be their exit strategy, 2x, 5x, whatever, what is the scenario that they can expect. What are the factors that influence the enterprise value? That is the earnings growth. Higher earnings will lead to higher valuations. Revenue growth, consistent sales growth indicates scalability. Profit margins, dividend policy. Hello. Yeah, hello. Yeah, the main point is for equity valuation is risk assessment, right? Yes, risk assessment, that is what we adjusted in this WACC sector. I showed you in my Excel only that beta we cover. Beta is a database already set in, and we can adjust the beta where it is required, leverage and leverage of beta. That is very important. Without adjusting the risk, we cannot actually say. Yes, yes. Little bit, can you explain more about beta factor? Yes, I will go there. Let us close this one first and then we'll go to beta. Okay. Yes. So what are the factors that influence? That is earning, revenue, profit margin, dividend policy, risk and capital structure, cost of equity, higher perceived risk, higher required return, lower valuation. So if the cost of equity is very high, the valuations will be lower. Debt and equity mix has to be moderate because it reduces WACC and gives us the tax shield benefit. Beta is a systematic risk. Higher beta stocks get discounted at higher rates. You know the market beta is 1, correct? But if the market beta is 1 and if my share beta is 1.5, 1.6, then I will have to apply the higher discount rates. So the market discount rate is only 6-7%, correct? That is the government bond rate. But we take 18 to 20%. Why we take this? Because we have to adjust the discount rate according to the beta.
Any other question? Okay. I just to add question, what the terminal growth rate, how much percent of growth rate we have to taken in that in any valuation in valuing a company? Terminal growth rate percentage. How can judge that? What is the sector you're talking about? Ma'am, कंपनी वैल्यूएशन और काहीतरी चालू आहे लाईव्ह Hey, any I sector, can't ma'am. hear. What is the Ma'am? question? I'll mute myself first. Okay. Ma'am, my question is, ma'am, like terminal growth rate, how the growth rate which a terminal value we are calculating, we're taking a growth rate. So there is no any specific sector specific growth rate, particular sector like FMG, this will be the terminal growth rate percentage we calculate, or we take let's say any real estate, this should be the probable growth rate we have to consider for the terminal value we're working out. The growth rate for the terminal value we're talking about. What should be the growth rate for the Growth that rate, one? I told you earlier also, we have to keep in mind about the GDP rate of the country, and we have to factor in that which is, if you can justify a higher growth rate, you can take a higher growth rate. And if you cannot justify, at least GDP rate तक तो हर sector grow कर ही रहा है, that we assume. And if you think कि भाई business ऐसा नीचे जा रहा है downfall की तरफ, तो growth rate वो कम ले सकते हैं 3-4%, but safely 5%, 7% you can take. Okay. But you can discuss on call with me if something is specific there, we can take a call. Okay, madam. I will discuss. Huh? Okay. Yes, yes. Yeah, anyone having any more doubts? No, ma'am, you can. So we were talking about the factors. So industry growth rate, see that point is coming only. So industry growth rate is very important. Fast growing industries, IT, fintech, EVs attract a higher multiple. Competition, intense competition reduces pricing power, that brings lower valuations. And then regulatory schemes of the government like Make in India, like that, PLI schemes, infrastructure push, real estate push. Macro factors can be interest rate, higher interest rates, higher discounting, lower valuation. And inflation we have to adjust. वही मैंने कहा ना, जो हमारा GDP growth rate है, we have to consider that as the primary rate according to which we have to adjust the terminal value rate, and we have to definitely justify what we are standing by, how we are arriving at that figure. And GST changes will also impact the valuations further. Next is method of valuation, DCF. So like we have already discussed this, what we are doing is estimating the future cash flow and then determining the discount rate, calculating the present value of the future cash flow, and then subtracting the net debt to arrive at the equity value. We adjust the debt because equity वाले को debt से वो नहीं है. Only impact that equity shareholders will bear is the interest leverage. So next is comparable company multiple market method, which is majorly used in the listed entities where the market data is very saturated, market data is very reliable, dependable types. But DCF is used where we do not have a dependable type of data majorly, but we have to develop it according to our understanding and discussions with the management, considering the grounded realities of the business. We cannot keep, like I have done a valuation of a SaaS based software, a SaaS company. So 1 minute. There they got lot of recognition in US market. They came to me with very big projections. Based on those projections, when I made the valuation, it was so high. But actually in India, they did not get anything as of now. It's been 2-3 years. So we have to understand the ground realities of Indian market, US market, which country we are doing the valuation. We have to understand that. That is the macro factor that we discussed earlier.
Next is comparable company, for which the data is very much available. Screener website is there, money control is there, BSc, NSC, it is there. Next is NAV method, where NAV method is used. NAV method is used in the investment companies, non-operational entities like in IBC. In case of liquidation, what happens? Any idea? On the basis of market value which they can fetch हाँ, the now because there sellable is value. going concern का concept ही नहीं है वहां पे. So आज जो value in the business है वही उनका value बनता है. For mutual fund. फॉर म्यूचुअल फंड भी आएगा ऑफ कोर्स. हम लोग इक्विटी की तरफ से बात कर रहे हैं अभी. म्यूचुअल फंड में भी यस ऑफ कोर्स एनएवी आता है. हाँ, तो फिर ये इन्वेस्टमेंट कंपनीज एंड नॉन ऑपरेशनल एंटिटीज के लिए है. और इसमें क्या होता है कि टेंजिबल का हम लोग करंट वैल्यूएशन ले लेते हैं एंड उसको हम लोग नेट ऑफ करते हैं लाइबिलिटीज से. सो वी अराइव एट द इक्विटी वैल्यूएशन. नेक्स्ट इज एनएवी अप्रोच कब यूज होता है? ज्यादा करके एनएवी यूज होता है 11 यूए में. 11 UA of Income Tax Act, which says this is the question. Issue price 120 NAV method है, DCF में 120 है, startup exemption है 200. So like this we can, in the first case NAV method है तो issue price 120 and FMV is 100. So FMV considered under section 11 UA is 100. So यहाँ पे ये टैक्सेशन का इम्पैक्ट आ रहा है कि एक्सेस ऑफ एफएमवी जो है 20 रुपीज है. सो टैक्सेबिलिटी अंडर सेक्शन 5627 भी आ जाएगी 20 लाख एंड टैक्स विल बिकम 5 लाख. The taxation I am not taking today. I am taking only the methods and approaches. Okay, 1 minute, I'll share other. So we are coming back to the DCF method. DCF method is, can you see the DCF sheet? DCF sheet is visible? Only PPT. DCF PPT is open now. Yes. So coming back to DCF, we have what are the risk of the DCF? So first risk can be DCF depends on the future cash flow. We do not know कि business में 5-10 years है भी कि नहीं. जैसे कि मैंने बोला कि वो US में that SaaS company has got a very big grant from the US government. India में उसका अभी तक it's been 3 years. There's no business. So even the small errors in the assumption, sales growth margin, working capital, capex, and even macro factor जैसे कि US में वो hit हो गया तो इंडिया में वो hit होगा, ये we cannot say. Next is discount factor. If we cannot estimate discounting rate at the correct way, it will change the valuations drastically. Even 1 or 2% change in the discount rate can swing the valuations drastically. Next is terminal value. Like I said that mostly 50 to 70% of the value comes from the terminal value. And it is very sensitive to the growth rate. Even 0.5% can shift the valuation heavily. Next is macroeconomic and the market risk. Macroeconomic, I told you कि US और इंडिया है, दुबई में कुछ चीज बहुत अच्छी है, सिंगापुर में कुछ अलग ट्रेंड है, तो वो डिफरेंट ट्रेंड यहाँ पे होगा कि नहीं, we cannot say that. So we have to adjust the risk accordingly. Inflation risk, interest risk, fluctuations risk, taxation changes. DCF usually assumes a stable macro environment. जैसे कि हम लोग ग्रोथ रेट बोल रहे हैं 5% ही होगा, but not always it is true. We have to keep on recalibrating, readjusting the terminal value, the growth rate, and hence what has happened is the valuations keep on changing. Every 90 days के बाद we have to take a fresh valuation if we want some investment to come in. Next is data availability and reliability.
Management bias. Management is very optimistic. I get so many people like they don't reach 1 crore, they talk about 100 crores. So we have to be very, very grounded when we are doing valuation. And this brings me to the close of the session for now. So I'll stop my screen here and I would really appreciate any questions coming up. Yeah, anyone having any doubts? Yeah, ma'am. We are doing a like valuation of a company on a earning or EBITDA multiple. We are taking enterprise value on the EBITDA multiple. We are taking a valuation, and we doing as on the DCA valuation. So, what will which all the value that more appropriate to any company, any sector we are talking about a valuation. Hello. Do Ma'am, you have any I'm audible? AI application for doing the same? Do we have any AI application which will do the valuation? Preeti ma'am? Yeah, 1 minute actually. 1 minute, I'll log in again. Okay. 1 minute. One minute, I think some network issue. She will log in again. Suddenly what happened? Hello? Yeah. Yeah, please. What is the question? Yeah, one by one we can do. First, I think Manish ji has doubt. Yes. Manish ji, Yeah. please you say Ma'am, about. my query regarding we do a EBITDA enterprise value calculated by multiplying with the EBITDA with the valuation with the multiple valuation multiple. So value enterprise calculating enterprise value on that basis all on the DCA value, which will be more appropriate. We give a realistic नहीं, valuation क्या of the company. सेक्टर है, क्या स्टेटस है, मतलब विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट हाउ कैन आई से ना I वैल्यूएशन just का to give better answer your question, like in FMG sector, हाँ like for the won't give example like the double has acquired the Basha Foods with a हाँ, valuation multiple of 22 times they beta multiple they जब have by लिस्टेड the एंटिटी आ रही है देन द डेटा इज ऑलरेडी देयर, तो वो मल्टीपल्स तो मल्टीपल्स मार्केट मल्टीपल्स ही लगते हैं उसमें. मैम ऐसा नहीं क्योंकि हर जगह क्योंकि हर केस इज अ सेपरेट केस बिकॉज ऑफ द बायर anxiety to buy a company. So at particular transaction, each transaction is a specific transaction with depending on the need of the buyer. So valuation multiple are escalated. They don't know how to do actual the cash flows or projections will support that or not. They are just taking a calculation simple valuation multiple, take a 22 times of multiple, which is to my understanding it's very on a higher side because normally 12 multiple is quite good, but taking a मनीष जी, 22 आर यू multiple. डूइंग दैट वैल्यूएशन? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी दैट. I mean, I'm saying a sector specific valuation. There's a company is buying a some company at a very high valuation multiple. That बट हाई approach I'm saying. वैल्यूएशन होगा ना, उसका इतना बड़ा ब्रांड नेम है, उसको नहीं वैल्यू करेंगे. Value, ma'am, brand is there. Brand to don't both are company are there. But हाँ, what I'm trying to say, man, the valuation multiples are valuing a company on a valuation multiple or taking on a beta on the DCA valuation. Both is a separate thing. Maybe that much of the for cash flow future profitable earning multiples are there or not. Earnings are there or not. Small there is a competitive market is there. That my point is that DCF is more realistic rather than the EBITDA multiple. That's my submission in the नहीं, matter. DCF इज रिलायबल. जैसे कि मैंने बोला, DCF इज जनरली यूज, बट जब
मार्केट मल्टीपल में क्या कंफर्ट है, लिस्टेड एंटिटी का डेटा इतना मैच्योर एंड रिलायबल अवेलेबल है, तो डीसीएफ से ज्यादा, देखो इन दिस केस सिनेरियोस ऐसा एक वो नहीं होता है वैल्यूएशन का मेथड, दे टेक 2-3 डिफरेंट वैल्यूएशन मेथड्स एंड देन दे समटाइम्स पुट द weights in the methods and then they arrive at a valuation. It is not the single valuation that they will define this. They can take 3 type of methods and put the weight and then arrive at them. No, I agree, ma'am. My submission question is here that because by buying some company or selling a company at that particular time, the valuation matter on a higher valuation multiple, they're doing a transaction. Whether that profitable, whether tomorrow that is the earning come or not, that is the point. Buying a something and whether the actual numbers will come or not is a totally different thing. Which my submission is that DCF give a much more valuable, better position about the company, which we projection we are working on that rather than the EBITDA multiple. Yes, you That's are my right. point. DCF gives much higher valuation because it is very futuristic. You are right. That's my point is there. That only Yeah, just comparing. डेफिनेटली डीसीएफ में वैल्यू ज्यादा आता है, बट अगर केपेक्स इंटेंसिव है तो फिर एनएवी मेथड में भी बहुत हाई वैल्यूज आते हैं, बट जनरली अगर हम लिस्टेड एंटिटी की बात करें तो बुक वैल्यू इतना कम होता है, 50 रुपए भी नहीं होता कितनी कंपनीज का, बट मार्केट प्राइस कितना हाई होता है. सो मार्केट मल्टीपल्स अलग है और बुक एनएवी मेथड अलग है. डीसीएफ इज गिविंग मोर वैल्यू डेफिनेटली. थैंक यू. Next, who is out? I think Amit ji told something. Amit ji? Anyone having any more doubts? There were also doubts in the chats. Give me one अच्छा, minute. I'll open the chat box. How to mitigate or minimize risk element in DCF approach? What best I understood is that if see, जैसे मेरे पास क्लाइंट आता है, अगर क्लाइंट को वन ऑन एक वैल्यूएशन रिपोर्ट चाहिए तो फिर वो वन ऑन कराता है, डिस्कशंस होते हैं. अब इन्वेस्टर अपने वो करता है, इनपुट्स देता है कि ये ऐसा नहीं है, तो फिर हमें देखना पड़ता है कि क्या इन्वेस्टर का पर्सपेक्टिव है, क्या मतलब ये सेलर्स का, ओनर्स का जो पर्सपेक्टिव है उसको हमें देखना पड़ता है, और अपना भी एक पर्सपेक्टिव स्टैब्लिश करना पड़ता है कि ये ऐसा चलेगा. बट डेफिनेटली शागुफ्ता जी एआई टूल नहीं है, बट बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे वैल्यूएशन आता है जो कि बहुत बॉल पर फिगर देता है और बहुत ही अनरिलायबल रहता है. सो व्हाट आई वाज टॉकिंग इज कि what I was talking about. They make changes if perspective changes. हाँ, तो डीसीएफ जब हमारे पास आता है अनलिस्टेड में तो क्या होता है कि अभी जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आया था, उसका 28 करोड़ का वैल्यूएशन आया था अप्रैल में, बट जब वो अभी आ रहा है जस्ट इन 6 months टाइम, उसका टर्नओवर ही उतना नहीं पहुंचा है, तो अगेन अब उसको इन्वेस्टर मिला, तब उसने इन्वेस्टर ढूंढना शुरू किया था, एक वैल्यूएशन लिया था. अब जब वो इन्वेस्टर लेके आएगा तो अब उसके फिगर्स भी डिफरेंट हो गए, उसका डीसीएफ भी चेंज हो गया, वैल्यू कम की हो गई, तो रियलिस्टिक अप्रोच तो हमें लेना ही पड़ेगा और वो हम लोग को एडजस्ट करते रहना पड़ेगा रिस्क को. जैसे मैंने बोला कि वो यूएस वाले जब आए मेरे पास तो उनका प्रोजेक्शन इतना हाई था, उनका वैल्यूएशन 300 करोड़ आ रहा था, इंडिया में उनको 1 करोड़ नहीं मिला अभी तक. 1 करोड़ छोड़ो, उनको बिजनेस ही नहीं आया है, तो वेरी रिस्की. ऑफ कोर्स जब भी हम डीसीएफ कर रहे हैं तो हमें अपने डॉक्यूमेंटेशन में ये होना चाहिए कि हमारे एजम्पशंस क्या है. मैडम, एजम्पशन को हम लोग को ट्रांसपेरेंटली वैल्यूएशन रिपोर्ट में लिखना चाहिए. सारे जो एजम्पशन करते हैं उसको रिपोर्ट के अंदर में सिग्निफाई करते हैं. हम लोग सिग्निफाई भी करते हैं और हम लोग वैसे भी जब प्रोजेक्शंस लेते हैं तो वो मैनेजमेंट का ही वो होता है. मैनेजमेंट हैज टू गिव द प्रोजेक्शंस, देन वी हैव टू टेक द प्रोजेक्शंस कि वो ठीक दिए हैं कि उनको कम करना है, और उसको रैशनलाइज करना हमारा काम होता है. और उसमें एजम्पशंस भी लेने होते हैं और एमआरएल भी लेना होता है कि मैनेजमेंट ने वो जो क्या एजम्पशंस लिए हुए. तो बेस्ड ऑन एजम्पशन यदि फ्यूचर में जो होगा रियलिटी के साथ उसको मैच करने से वैल्यूएशन को उसी तरह से मॉडिफाई भी कर सकते हैं वंस रिपोर्ट इज फाइनलाइज्ड. रिपोर्ट तो एक बार बन गई, उसके बाद उसकी वैलिडिटी ही 90 days की रखी हुई है, तो वो तो
अगर 90 डेज के अंदर कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आ गया और एक नया इन्वेस्टर भी आ गया तो वैल्यूएशन रिवाइज होगा ही, क्योंकि इन्वेस्टर को पता है कि आपके पास एक बड़ा ऑर्डर आ गया है तभी वो इन्वेस्ट करने आ रहा है, तो वैल्यूएशन तो रिवाइज हो जाएंगी। करेक्ट। हाँ, तो assumptions आर नॉट द, इट इज ओनली फॉर द सेफ्टी की ये बेसिस क्या है वैल्यूएशन का, क्योंकि डीसीएफ में बहुत रिस्क है ना प्रोजेक्शंस की। Ma'am, there is another point of startup valuations. May law new startup has come. How to value that a startup? What are the factors we have to consider while valuing a startup? Valuation consider करने के लिए. देखिए, वैल्यूएशन ऑफ स्टार्टअप्स, अगर मैं मेथडोलॉजी के ऊपर बात करूँ ना, तो वहां पे वो जो मेथड्स दिए ना, बर्कस मेथड, स्कोर कार्ड मेथड, वो आपने देखा है मनीष जी? या वो देखा मैम, देखा. हाँ, तो वो हम लोग जनरली, मतलब मुझे इंडिया में नहीं लगता कि हम लोग जनरली वो यूज करते, क्योंकि वो बहुत रिलायबल नहीं लगता। हम लोग घूम फिर के डीसीएफ पे ही आते हैं। करेक्ट और करेक्ट मैम, वेरी राइट. हाँ, क्योंकि वो मेथड्स ना, वो मेरे को लगता है वो अमेरिकन कॉन्सेप्ट पे बने, और वो शायद अमेरिकन इन्वेस्टर को ही वो अप्रिशिएट करते हैं, इंडिया में तो नहीं करते, मेरे को ऐसा फील हुआ है। बट हम लोग को इंडिया में जब हम डीसीएफ ही अप्लाई करते हैं स्टार्टअप्स के लिए, और वहाँ रिस्क हाई है, एडजस्टमेंट्स बहुत सारी करनी पड़ती है। That's true मैम. We are doing on a DCF method only. हाँ, जितना भी डीसीएफ स्टार्टअप ही। DCF ही देखिए, करेंगे. अभी मैंने जैसे बोला कि एक सैस वाला है जिसको अमेरिका में ग्रांट मिल गया। एक बहुत छोटा सा अभी उड़ीसा का आया मेरे पास, उसने मुझसे बहुत छोटा, उसका 1 करोड़ के टर्नओवर पे उसका वैल्यूएशन 7-8 करोड़ आ रहा है। उसने वो एसटीपीआई में डाला और उसको तुरंत वैल्यूएशन के हिसाब से उसको 25 लाख चाहिए था, उसको तुरंत फंडिंग हो भी गया, क्योंकि वो रिलायबल बात कर रहा था। हवा में, हम हवा में बात करेंगे तो वैसे भी फंडिंग तो वैसे भी नहीं आ रही, इस वक्त फंडिंग कहाँ आ रही है, इन्वेस्टर्स है ही नहीं करेक्ट अवेलेबल। करेक्ट करेक्ट करेक्ट. बहुत ज्यादा डीसीएफ को रेशनलाइज करने की जरूरत है। मैम एक क्वेश्चन अभी अभी समझी है आज बहुत एआई टूल्स के ऊपर. तो मैम वैसे कोई अब है जिस लाइक हमें वैल्यूएशन डाले जस्ट भी, या वैल्यूएशन मल्टीपल के ऊपर कोई सम टूल्स आर देयर कि हमें किसी एक भी तो सेक्टर का स्पेसिफिक एक तो ऐसा हमें कोई वेबसाइट है बाइजेक्स करके है, और एक टूल है वैल्यूटिको करके सॉफ्टवेयर है। दो चीजें हैं जो मैंने यूज की है, तो मुझे मतलब पता है। मतलब लेकिन वेल्टिको और दूसरा पहला कौन सा बोला आपने? बाइजेक्स करके वेबसाइट है, मैं एक बार दिखाती हूँ आपको। ओके. क्या आपको ये शेयरिंग अलाउ करना पड़ेगा? अलाउ किया है। हाँ, दिव्यांश प्लीज अपना क्वेरी पूछिए। नहीं मैम, वो आपसे आज कर रहा था मैम कि वो वैल्यूएशन टूल आप कर रहे थे ना, कर रहे थे मैम. हाँ मनीष जी, मैम बता रही है वैल्यूएशन टूल। उसके पहले हाँ. दिव्यांश जी का कुछ क्वेरी है। दिव्यांश जी। ये देखिए, Yes, sir. ये वेबसाइट है जिसमें आप क्विक वैल्यूएशन है। एक सेकंड, शायद आपका, एक मिनट मैम, स्क्रीन नहीं दिख रहा एक्चुअली। आपने जब वापस ज्वाइन किया तो मैंने को होस्ट नहीं बनाया। एक एक मिनट, मिनट। आ गया देखिए, ठीक है, दिख रहा है अभी? स्लो है अभी, लो, यस नाउ इट्स देयर। ये वेबसाइट है बाइजेक्स करके। बट ये बहुत ज्यादा बड़ा फिगर बताती है, और इसको बहुत रेशनलाइज करना पड़ता है, बहुत ही। मुझे तो ये यूजलेस ही लगा एक्चुअली, बट आप पूछ रहे तो मैं बता रही हूँ। ये वेबसाइट है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, ये ऐसे देखिए, फ्री बिजनेस कैलकुलेटर में गए, ये ऐसे बोलेगा आप अपना सेल्स डालिए फटाफट, ऐसे सब डालेगा, और ये देखो डिक्लाइनिंग रेवेन्यू है कि स्टेडी रेवेन्यू है, एडजस्टमेंट्स है इसमें। बट फिर भी ये वैल्यू बहुत ही हमारे डीसीएफ के आसपास भी नहीं आती है इसमें। तो एक मेरे क्लाइंट है, उन्होंने दुबई में ये वेबसाइट खोला और मेरा एक वैल्यूएशन रिपोर्ट लिया, और मुझसे इतनी देर 1 घंटा डिस्कशन चलता रहा। बट वी अराइव्ड एट अ डिस्कशन की जो डीसीएफ है वो धीरे धीरे एक ट्रेंड में चल रहा है, और ये क्योंकि एक सॉफ्टवेयर है, ये हर एक को सेम तरीके से रैशनलाइज कर रहा है। वो ये आपने बहुत अच्छा बात बोला कि सॉफ्टवेयर है वो तो सबको एक नजर से देखेगा। हाँ, वो एक्चुअल में मतलब ये मार्केट के वे- लिए वो ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से तो वैल्यूएशन का मार्केट बढ़ रहा है। सॉफ्ट ये
ये टूल को बोलते हैं कि बॉल पार्क फिगर देगा, लेकिन ये बॉल पार्क फिगर भी बहुत ही मिसलीडिंग आती है, मुझे ऐसा फील हुआ। अच्छा, और एक वेबसाइट आपने बताया था शायद। मैंने एक सॉफ्टवेयर बताया था, वैल्यू टिको सॉफ्टवेयर, ये है, ये ऑनलाइन, ये बिजनेस वैल्यूएशन। ये इसकी मैंने तारीफ सुनी है, मैंने यूज नहीं किया है, बट इसकी मैंने तारीफ सुनी है। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, हम ग्रुप में भी दे देंगे वैल्यू टिक को। मैं एक बार चैट्स में लिख देता हूँ। ठीक है। ठीक है, एनी एनी अदर दिव्यांश क्वेश्चन? जी को था डाउट, दिव्यांश जी। हाँ बोलिए। Hello, ma'am. Hello, sir. Ma'am, a small query, ma'am, regarding as you were discussing regarding startup valuations, ma'am, for the new age, particular tech firms, ma'am, since cash flows are generally very skewed in the initial years, so, matlab, isn't matlab, if we prefer a DCF method, be it FCFF or FCFE, since the cash flows are only skewed, so wouldn't the valuation using DCF, any of the DCF methods, be not less appropriate? Rather, a reference point like a count matlab, any like a, not like a PE, but instead of PE maybe click ratios or maybe conversion ratios, all those type of methods, wouldn't that be more appropriate in startup valuation specifically to tech firms? Yes, you can use that. I have not used it, but generally when we sit with investors, they do not talk about clicks. Matlab, I have not sat with that kind of investors. If you are sitting with that kind of we have to understand this from the shoes of the investor also. See, if you are going to the market and if you are buying iPhone, what you are getting, see, price is what you pay and value is what you get. So what is investor's point of view, we cannot ignore. Okay. Hey, ma'am, my point was ki since the cash flows are only very skewed, like nowadays it's a trend of having negative cash flows in the initial years, and because just That's on what the I basis of said the ना कि growth rate. मेरा जो सैस वाला है उसमें यही तो इशू हो गया, स्क्यूड ही है ना, वो वैल्यूएशन ही फेल हो गया, वहां पे स्टैंड ही नहीं हो रहा है वो। सो इफ यू थिंक कि क्लिक वाला हो सकता है, तो आई हैव नॉट डन दैट, यू कैन ऑफ कोर्स ट्राई इट एंड मे बी आई मैम, विल। बाय क्लिक आई डोंट मीन जस्ट क्लिक, मतलब उस टाइप का कोई भी, जैसे पीई होता है, पी इज ऑन बेस्ड ऑफ अर्निंग, तो डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री, जैसे शिपिंग के लिए मतलब टनेज पर रुपीज हो गया, मतलब इस टाइप के जो भी मल्टीपल, जैसे कोई वेबसाइट बेस्ड है तो आजकल शायद क्लिक रेशियोज उतने वैलिड नहीं रहे, बट एक समय पे क्लिक पर सेकेंड या क्लिक पर रेवेन्यू एंड उस टाइप के, मतलब डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री वैसे रेशियोज, बिकॉज उनका सारा वैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन सेल्स, उनका प्रॉफिट तो मैम नेगेटिव ही रहता है आधे से ज्यादा टाइम, मतलब एटलीस्ट फॉर द फ्यू इयर्स। उसको ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू से जो करते हैं वो एक अलग वो है। आप जो मतलब ये जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं वहां के मल्टीपल्स ही अलग हैं। यस मैम। हाँ, अभी सैस बेस्ड में मैंने तो जो लिया था वो वहां पे तो क्लिक से मतलब भी नहीं था। खैर वहां पे मतलब है कि कितने क्लाइंट्स हमें मिलेंगे और हम कितनी जगह सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करेंगे। अभी एक बिल्कुल एक ब्रांड न्यू मेरे पास एक आया है जिसमें तो वैल्यूएशन का लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा था। 6 महीना हमारी मीटिंग्स चली, अब जाके हमें थोड़ा समझ आया है। वो उसमें क्या है कि जैसे अमेजोन एक ई कॉमर्स पोर्टल है, हमारे इंडिया में दिख रहा है, ग्लोबली सब जगह दिख रहा है। एक पोर्टल है जो कि है तो वो गुजरात की कंपनी का, बट वो काम करता है कनाडा में। ये एक बहुत यूनिक केस है, शायद किसी को मतलब उसमें कुछ कनेक्ट मिले। उनका कनाडा में वो पोर्टल है जिसमें मतलब अगर हम बात करें तो 10 लाख 20 लाख पर मंथ, INR की ही बात कर रही हूँ, 20 लाख या एक टोटल 1 करोड़ पकड़ लो, हर महीने आ रहा है 1 करोड़, यानी 12 करोड़ उनका महीने साल का आ रहा है, और आ रहा है 5-6 साल से। बट वो इंडिया में उसकी जो फर्म है, जो कंपनी है, उस कंपनी के पास सिर्फ 5 लाख का टर्नओवर ही लोग बुक कर रहे हैं। वो टर्नओवर को बुक नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि कनाडा से वो पैसा इंडिया नहीं आ पा रहा है। वो इंडिया इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि इंडियन फर्म में कुछ भी ऐसा दिख ही नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? वेबसाइट एसेट्स में ही नहीं दिख रही है। अभी वेबसाइट को एसेट में दिखाने का क्या मतलब होता है कि हम लोग कॉस्ट अप्रोच लेते हैं। प्लीज करेक्ट मी इफ somebody has more idea on this। हाँ, what has happened कि वहां पे हम लोग अगर कॉस्ट अप्रोच भी लें तो जो डायरेक्टर है वो कहता है ये वेबसाइट तो मैंने 10 साल पहले डेवलप की, मेरे पास कुछ बिल भी नहीं है, कुछ भी आइडिया ही नहीं है कि ऐसे डेवलप हो गई है।
और वो डेवलप होके इतना ह्यूज बिजनेस कर रही है कनाडा में। तो अब हमारी 6 महीने के बाद ये समझ में आया है कि वो इंटेंजिबल्स के फॉर्म में हम अपनी बुक्स में दिखाएंगे। तो ये बहुत बड़ा सेक्टर है इंटेंजिबल्स, जो हमने भी मतलब मैंने भी अभी स्टार्ट किया है। आई एम ऑल्सो ट्राइंग माई लक इन दैट कहेंगे। और ये बहुत बड़ा एक क्लाइंट है जो जिसको अपना पैसा इंडिया में लाना है, पहले बुक्स में वो एसेट को बनाना है, तभी वो पैसा इंडिया में आएगा। दिस वॉज अ वेरी यूनिक केस, सो आई थॉट आई शेयर। ओके ओके, थैंक यू मैम। नहीं मैम, बाय क्लिक रेशियो मेरा भी वही मतलब था, वो तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेशियो में डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे आपने रेशियो डिफाइन किया कि भाई कितना सेल जनरेट कर रहे हैं, कितना ला पा रहे हैं, हाँ वही। तो जैसे इस केस में भी वो मतलब क्लिक वाला रेशियो इज ऑल्सो मोर ऑफ जहाँ इंटेंजिबल इश्यूज है वहीं पे कि भाई आप अल्टीमेटली कन्वर्ट कितना कर पा रहे हैं, कन्वर्ट नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप ट्रैफिक कितना ला पा रहे हैं वेबसाइट पे। हाँ, देखिए अब उनका ट्रैफिक वाला भी एक इंटेंजिबल बनेगा, उनका प्लगइन वाला भी एक इंटेंजिबल बनेगा। कन्वर्जन रेशियो भी हमें देखना पड़ेगा कितना कन्वर्ट हो रहा है, तब तो इंटेंजिबल को जस्टिफाई करेंगे। यस मैम, अंडरस्टूड मैम, और थैंक यू मैम। बहुत ही क्रिटिकल असाइनमेंट है। मतलब वो बहुत ही मजेदार भी है, बोल सकते हैं एक्साइटिंग। जो स्कैरी है वही एक्साइटिंग है एक्चुअली वैल्यूएशंस में। तो ट्रू मैम, ट्रू मैम, या थैंक यू मैम। या थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एनी अदर क्वेश्चन? Yes, anyone has any more doubts? Ma'am, just to validate another Divyansh question, I have one like some startup is there. Their past history is not doing well, हाँ but it's a manufacturing unit due to some because of COVID and other reasons are there, geopolitical issues. Company has not performed well. Now हाँ they are on the block for sale. Now there is an alternative way to go with the replacement value of that unit. If that similar unit I can establish now, the cost which coming is today, whatever will be the cost. So we should take a replacement value as a valuation method, valuing that in the company because they know financial numbers are not there or there is a loss because of this too much disruption. Can we take a replacement cost value method also as a valuation method for मनीष जी, valuing a company? अगर आप मुझसे किसी असाइनमेंट के लिए पर्टिकुलरली पूछ रहे हैं तो आप प्लीज मुझे कॉल करिए, वो बेटर रहेगा। मैं यहाँ पे कुछ एडहॉक बात करके कोई कंक्लूजन नहीं दे सकती विदाउट लुकिंग एट एनीथिंग। यू अंडरस्टैंड कि हमारा जॉब कितना सेंसिटिव है। Okay, I got it, ma'am. Got it. यस यस I यस, just share your number. I will talk to you personally. I'll share it in the chat box right now. Anybody can just WhatsApp me and then we can fix up time and call back, connect. So I'll Okay, share my ma'am. number. In the group also I will share. Don't worry. हाँ, Ma'am का number I will share in the group. मैंने डाल दिया है, किसी को भी चाहिए यू कैन प्लीज कनेक्ट एंड Yes. प्लीज ग्रुप में भी बताइएगा कैसा लगा, सो आई विल हाँ इम्प्रूव हाँ, इट। डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली। वो तो हम यस, लोग एक मैसेज देते ही हैं। लास्ट वन थिंग, जैसे बहुत सारा वैल्यूएशन अभी चल रहा होगा, टैरिफ बहुत सारे चेंज हो रहे हैं, तो इमीडिएटली मतलब बहुत इम्पैक्ट आ जाता है वैल्यूएशन पे। सपोज हमने 5 इयर्स डीसीएफ लिया या जो भी, तो अभी टैरिफ चेंज होने से तो पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया। हाँ, लेकिन वो हम मेरे पास जो असाइनमेंट है उसमें अभी ऐसा कुछ डायरेक्टली इम्पैक्ट मुझे नहीं दिख रहा है, बट डेफिनेटली वैल्यूएशन चेंज हुए तभी तो प्राइसिंग चेंज हो गई ना, हर जगह डिस्काउंट आ गया। जो हम्म डिस्काउंट नीचे कैस्केडिंग इफेक्ट आ गया है तो हम्म सब चीज डिस्काउंट ही हो गई ना। अगर हम मोटा मोटा बोलते हैं ना, रफ बात करें। हम्म हम्म, ठीक है। ओके, यस, सो एनीवन हैज एनी मोर डाउट्स? एनीबडी बिफोर वी वाइंड अप? एनीवन हैज एनी डाउट्स? नहीं? Please share the PPT and Excel files. दी यस। एक्सेल आई कैन नॉट शेयर बिकॉज वो मेरा हाँ मैम, पर्सनल वो तो डेटा है सेंसिटिव कंपनी। डेटा है, एक्सेल नहीं होगा, वो तो पीपीटी। मुझे दिखाना था आपको कि कैसे वो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। मैम तो सैंपल एग्जाम्पल डाल के दिखा दीजिए, आपके पर्सनल फिगर्स मत डालिए। चलेगा, दूसरे ठीक, फिगर्स एक नो फॉर एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कोई और फिगर्स डाल दीजिए, चलेगा, बिकॉज ये एक फ्लो समझ में आता है उसमें। श्योर। ठीक है, ठीक है। एनी मोर डाउट्स एनीवन? नहीं? आई थिंक दैट्स डन मैम, थैंक यू सो मच। थैंक पेशेंटली यू आपने सो सबके मच। डाउट सॉल्व किए। बहुत छोटे मोटे डाउट्स होते हैं, एंड वी कीप मतलब एक प्रॉपर एक्सपर्ट चाहिए। दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव स्टार्टेड दिस प्रोग्राम, दैट वी कैन कनेक्ट विद द रेलेवेंट स्पीकर्स, रेलेवेंट एक्सपर्ट्स, ताकि हमारे छोटे छोटे डाउट्स हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग द इनविटेशन मैम, इट वॉज Thank रियली you so much वंडरफुल। for this opportunity and following up with me when I was just here and there busy with taxation. Thank you यस, so much, my dear audience. Any question, please connect with me.
Yes, we'll give the मैम्स number and everything in the group. Also PPT जब मैम हमसे शेयर करेंगे तो we'll give. And also we will upload the video on YouTube. तो आप जिसको रिवाइज करना है या वापस कुछ देखना है and तो आराम से they can see. All the PPTs and everything will be there in the description of the video whenever we upload. So I will have to change some things and then I will share the PPT. Even today नहीं होगा तो कल हो जाएगा, ठीक है? Yeah. Thank you so Okay, much. thank you everyone. Thank you मैम. Thank you the participants जो हॉलीडे में भी हम लोग के साथ रहे. Thank you everyone. It was great experience today. Thank you. Thank you, madam. Yeah. Yes.